Good morning to all. Let us do some question from the trigonometry chapter for class 10. Okay. Trigonometry for class 9 and 10, not only 10, 9 and 10, ICC board. Find the value of A, where A is an acute angle, means 0 to 90 degree. Greater than 0, less than or equal to 90 degree. There are 5 parts are there. Let me solve one by one. I will solve all the questions of number 12. Given, first one given 2 cos square A minus 1 equal to 0. Let me solve. Okay, 2 cos square A minus 1 equal to 0. You have to solve for A. The A should be in between 0 to 90 degrees. Okay, just see how to solve. See the question number 12, first part. It is given 2 cos square A minus 1 equal to 0. This implies 2 cos square A equal to how much? Minus 1 को उधर भेज दो, 1 आ जाएगा. Then 2 को divide करो. Cos square A equal to how much? 1 by 2. Then cos A will be taking square root both sides, 1 by root 2. Now for what value of cos? That will be 1 by root 2. You have to memorize the table values of cosine. Cos 45 degree is equal to 1 by root 2. You have to memorize the table values. Okay. The comparing both sides, A equal to how much? A is equal to 45 degree. दोनों साइड जब कंपेयर करेंगे तो A का वैल्यू मिल जाएगा, दैट इज 45 डिग्री. A इज इक्वल टू 45 डिग्री. आई थिंक इट इज क्लियर. फर्स्ट और क्वेश्चन गिवन 2 cos स्क्वायर है माइनस 1 इक्वल टू 0. ये तुमको क्वेश्चन में दिया है. पहले क्या करना है तुमको? माइनस 1 को उधर भेज दो, प्लस 1 हो गया. 2 को डिवाइड करो, 1 by 2 हो गया. टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, 1 by root 2. देन cos कितना डिग्री? 1 by root 2 होता है ना. cos 45 इज इक्वल टू 1 by root 2. देन कंपेयरिंग बोथ साइड, A इज इक्वल टू 45 डिग्री. फर्स्ट पार्ट समझ में आ गया आई थिंक. लेट्स गो सेकंड पार्ट. सेकंड पार्ट क्वेश्चन गिवन, जस्ट सी व्हाट इज गिवन सेकंड पार्ट. द सेकंड पार्ट क्वेश्चन गिवन sin 3A minus 1 इक्वल टू 0. ये तुमको क्वेश्चन में दिया है. देयरफॉर sin 3A इज इक्वल टू माइनस 1 को उधर भेज दो, प्लस 1 हो जाएगा. नाउ sin 3A, sin कितना डिग्री? 1 होता है. You have to memorize. Tell the table values of sin how much? The answer is 1. Okay, sin 90 degree और pi by 2. sin 90 is 1. Now दोनों साइड कंपेयर करो, क्या मिलेगा? 3A is equal to 90 degree. A equal to how much? 90 by 3. That means 30 degree. In this way, second part also completed. तो फर्स्ट तुमको देखना है क्या दिया है क्वेश्चन में. sin 3A minus 1 इक्वल टू 0. माइनस 1 को उधर भेजने के बाद प्लस 1 हो गया. 1 का जगह में मुझे लिखना है साइन कितना डिग्री? 1 होता है. तुमको टेबल वैल्यू चलान करके लिखना है. sin 90 कितना? sin 90 1 होता है. तो 1 का जगह में लिख दे sin 90. अभी दोनों साइड देखो कंपेयर करो, इधर भी sin 3, इधर भी sin 90. दोनों से कंपेयर करो, क्या मिलेगा? 3A इक्वल टू 90, A इक्वल टू 30 डिग्री. इन दिस द सेकंड पार्ट क्वेश्चन ऑल्सो कंप्लीटेड. लेट अस गो टू थर्ड पार्ट क्वेश्चन गिवन. थर्ड पार्ट क्वेश्चन गिवन 4 sin square A, 4 sin square A minus 3 इक्वल टू 0. ये तुमको क्वेश्चन में दिया है. अभी मुझे फाइंड करना है A का वैल्यू. देखो पहले क्या करना है तुमको, 4 sin square A इधर रखो, माइनस 3 को उधर भेज दो, दैट विल बी प्लस 3. नाउ डिवाइडिंग 4 बोथ साइड, sin square A 3 by 4. After taking square root both side, sin A is equal to root 3 by 2. अभी तुमको लिखना पड़ेगा, देखना पड़ेगा साइन कितना डिग्री रूट 3 by 2 होता है. यू हैव टू मेमोराइज. इफ यू नॉट मेमोराइज देन इट इज डिफिकल्ट टू सॉल्व. रूट 3 by 2 साइन हाउ मच? दैट इज साइन 30 is 1 by 2, sin 60 is root 3, sin 60 degree. Sin 60 means pi by 3. Now comparing both sides, what will get? The value of A, that will be 60 degree. In this way, third part question also completed. I hope you are able to understand the process solving third part of number 12 from the chapter trigonometry. Just to solve equation type. Let us go to the fourth part. Only 2 parts left. Fourth part question given. Just see. See the fourth part question given. Cos square A minus cos A equal to 0. ये तुमको क्वेश्चन ने दे दिया, तुमको फाइंड करना cos A का वैल्यू, A का वैल्यू. Now just apply your common sense. Taking cos A common. What is left here?
cos a minus 1 equal to 0. Therefore, cos a equal to 0, एक part cos a equal to 0 and cos a minus 1 equal to 0. Cos a minus 1 equal to 0. Draw middle one line here. Though part you are getting cos a, cos how much 0? Cos 90 is equal to 0. Comparing both sides, a is equal to 90 degree. One answer you are getting a equal to 90 degree. Now second part you see cos a minus 1 को उधर भेज दो, प्लस 1 हो जाएगा. अभी देखो cos a, cos कितना डिग्री 1 होता है? sin 0 0, cos 0 1, cos 0 degree 1 होता है. Now comparing both sides, a equal to how much? A is equal to 0 degree. Therefore, you are getting the answer a is equal to 90 degree, another a equal to 0 degree. The fourth part question completed. Let us go the fifth part question. The fifth part question given 2 cos square a, 2 cos square a plus cos a minus 1 is equal to 0. This is the given. You see, you have to factorize. Just middle term breaking, you know, in case of quadratic equation you have done. Just apply करो, एक कैसे factorize होगा. 2 cos square a, 2 cos square a, this will be plus 2 cos a minus cos a. By middle term breaking, minus 1 equal to 0. See, from the first 2 you have to take 2 cos a common, 2 cos a common. What left here? Cos a plus 1. लास्ट दोनों कितना कॉमन जाएगा? माइनस 1 कॉमन ले लो, बचेगा cos a plus 1. अभी देखो क्या आ रहा है, cos a plus 1 को बाहर भेज दो. Just like you know, middle term breaking factorization. What left here? 2 cos a minus 1 equal to 0. So you are getting two part here. Therefore, cos a plus 1 equal to 0, एक part, and 2 cos a minus 1 equal to 0. So first you will see cos a will be how much? Cos a will be 1 by 2. minus 1 को उधर भेज दो, 1, 2 डिवाइड हो जाएगा 1 by 2. cos कितना डिग्री 1 by 2 होता है? As per the table values, cos 60 is 1 by 2, cos 60 is 1 by 2, sin 30 is 1 by 2. Comparing both sides, a is equal to 60 degree. एक तो आंसर मिल गया मुझे, a is equal to 60 degree. बट इधर देखो क्या हो रहा है, इधर एक्चुअली cos a is equal to minus 1, प्लस 1 को उधर भेज दिया, minus 1. Now minus 1 means cos how much? Cos 0 1, cos 180 degree is minus 1, means cos 180 degree is minus 1. You have to memorize cos 180 is minus 1. Now comparing both sides, a is equal to how much? 180 degree. But as per your condition, the a value should be 0 to 90. Therefore, 180 we cannot write. If they have not mentioned any condition, then you have to write a is equal to 180 degree and a is equal to 60 degree. As the question mentioned 0 to 90, therefore 180 is beyond 90, therefore we cannot write this one. This is the right answer. If there is no condition given, then you have to write both the answer, a is equal to 180 degree and a equal to 60 degree. In these are the 5 parts of the trigonometry equation based question. Thank you for today's class. Next day I will do more solves.